capitals, ladies and gentlemen. This is basically where we get the voice of Delhi to roar out loud, not just about the cricket, but about the beating heart of the city that we all love so much. We Are Capitals is the voice of Delhi, and by definition, we are also sort of voices of Delhi, aren't we? I host the morning show for 94.3 Radio 1 in Delhi, 7 a.m. to 12 noon. Shameless plug done. And now, of course, it is time to talk about those who are populating our panel. These are the three pillars of Delhi and of Delhi Capitals. Their work is stellar in making Delhi a better place, making Delhi breathe a little easier as well. I could, of course, go on and on, but really, is there any better way to get them to introduce themselves than with their own voices? We've got the wonderful Sunita ji, we've got Ripu, Daman, and we've got Yogesh. Starting, of course, with Sunita ji. Sunita ji, please, it'd be nice if you could introduce yourself. Yeah, my name is Sunita और मैं रॉबिनहुड आर्मी के साथ पिछले 5 साल से काम कर रही हूँ। अगर मैं रॉबिनहुड आर्मी के बारे में बात करती हूँ तो रॉबिनहुड आर्मी दिल्ली से ही स्टार्ट हुई थी 2014 में। नील और उसके कुछ फ्रेंड्स ने घर से खाना बनाया और मूलचंद फ्लाईओवर के नीचे खाना बांटने का काम शुरू किया। रॉबिनहुड आर्मी एक वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें हमारे साथ स्टूडेंट्स जुड़ते हैं, सीनियर सिटीजन जुड़ते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, होम मेकर, हम सब लोग मिलकर अपने फ्री टाइम में रॉबिनहुड के लिए काम करते हैं। हम अपने फूड पार्टनर्स लाइक कॉर्पोरेट किचन्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, इन सब के साथ मिलकर जितना भी सरप्लस फूड होता है उसको हम स्ट्रीट में जाके नीडी लोगों को बांटते हैं। हमारा धर्म और हमारा मजहब सिर्फ एक ही है, हमारा मोटो सिर्फ एक ही है कि कहीं भी सरप्लस खाना वेस्ट नहीं जाना चाहिए और कोई भी इंसान भूखा नहीं सोना चाहिए। Food for thought there. And if you're thinking of standing up and applauding, what I would suggest you do with your hands instead is to actually log on to Robinhood Army and see if you can volunteer or help, because help is always required and help is always appreciated. तो applaud तो करना है, आप कितना कीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो है उसका पार्ट बन जाइए तो बेटर रहेगा. And talking about being part of something, well, he's actually made something that you can be a part of, and that is plogging, the Plogman of India himself. Ripu Daman, मतलब मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से it'd be better if you introduce yourself. So, plogging, a fancy term of cleanup. The idea was 5-6 years ago, we okay, let's get people involved in a cleanup. But people won't turn up. So we thought, okay, let's make it cool. Let's make it the coolest thing to do in the country. That was the mission statement. We started from there, and the vision became of a litter free India. तो वो एक मिशन स्टेटमेंट लेके हमने शुरुआत की, दिल्ली से शुरुआत की, एक छोटे से पार्क से शुरुआत की, और आज more than 100 cities में हमने cleanups organize किए हैं. More than 100 communities across the country are doing plogging today, are waking up every day and trying to make a small difference to their world, and that makes a huge difference. और आर्ट्स, मतलब जब हम बात करते हैं आर्ट्स की तरह से लगता है, oh my god, arts galleries, air conditioned. But the man who's taken art to the streets, quite literally, is Yogesh from Delhi Street Art. Yogesh, tell us a little about what you do. So, my name is Yogesh, and about 8 years ago, almost 8.5 years ago, I was running in Lodi Gardens, so I saw an opportunity to do something different after being overseas for a while. The idea came to make the parts of the park more colorful. We have beautiful parks in Delhi, we have a lot of good spaces, but there isn't that much of art in the public spaces. We've been to nearly every part of the country, restoring, rejuvenating, and of course beautifying spaces, be it small villages up in northern parts of Himachal, be it slums in some very neglected parts of Delhi, schools, lots of schools where they don't even have a school building, they don't even have walls, there's just a bunch of students sitting under a metro pillar. तो हम अपना छोटा सा उसके अंदर एफर्ट कर रहे हैं, one tiny wall, one tiny space, one tiny garbage dump at a time, and hoping that it will become a bigger change overall, not just for the country but outside of the country. Absolutely. Trying to bring change in their own fields, and their playing fields are different, but the thought is one. Making the world a better place. And talking of fields, we're going to be talking about that one playing field that is right now the hot topic of discussion, the T20 field. तो आप बताइए कि दिल्ली कैपिटल्स के साथ रोर कैसे मचाया आपने? तो रोर मचाने के लिए तो हम 3 साल से तैयार बैठे थे. जी. फिर कोविड आ गया and things
became a whimper for a short while. For sure. Ultimately, the first artwork, which was one of the bigger artworks we did at Aero City, right behind all the hotels as we go onto the plazas, and which was a rather big wall, and decided to create one of the largest murals I think DC's had anywhere, and this was done in a period of about a week's time. Wow. The first mural was unveiled in September of last year, so it actually essentially brings in the team, the spirit of Delhi Capitals, as well as the the heritage of Delhi, the city that we are in. How to put all that together in a very colorful, vibrant, and a very positive manner. The next one we done very recently at the Rendezvous Festival at IIT Delhi. Lovely location, and it was bang in the middle of their festival. So we had a lot of interaction while we were painting the artwork. And again, the theme was around Delhi, Delhi Capitals, and how they interact. Of course, this time we knew this was a student community, so how to make it more fitting to that environment and the festival itself, which is happening. And then of course there's the Plogman of India. दौड़ा के बताया आपने लोगों को कैसे कर सकते हैं. So how has your association been? कैसे मतलब रोर ये वाला कैसे मचा? So इसमें हमारे association में we did not just talk about Delhi, or we did not think about Delhi. We thought about NCR as a whole, and we went to Gurgaon and actually organized a plogging drive there. Trash workout, कूड़ा कसरत, Delhi Capitals के crew को करवाया. Okay. And most of them, I asked them the question, how many people picked up litter from the road for the first time, and most of them said yes. And the impact that comes from it is that those people will not litter again. So हमने रोड मचाया, हमने सफाई की, and I hope this association continues. We go back so that at the stadiums itself, जब लोग वहाँ से spectators निकले वहाँ से, तो किसी को सफाई करने की जरूरत ना पड़े. हम spectators, we clean up our shit, we take it back, we ensure we leave the stadium clean. Absolutely. And आपकी association, how has your association been with Delhi Capitals? हमारा एसोसिएशन दिल्ली कैपिटल के साथ स्टार्ट हुआ 2019 में. 2019 में जब IPL मैचेस हो रहे थे तो वहाँ पे काफ़ी सरप्लस फूड बच रहा था. तो हमारे रॉबिन्स ने वो सरप्लस फूड लेके आसपास जितनी भी झुग्गियाँ उन सब झुग्गियों में बांटना शुरू किया. दिल्ली कैपिटल ने हमें अपॉर्चुनिटी दी. अंडर प्रिविलेज 25 बच्चों ने लाइव मैच देखा IPL का. वो उनके लिए बहुत प्राउड की बात थी और उनको काफ़ी इंस्पिरेशन मिली इससे. और आई थिंक वो उनके लाइफ की सबसे बड़ी स्टोरी रही होगी. How does it feel that we're so close to qualifying? कोई मोमेंट आपको याद है कि मतलब आपको लगा था यार ये फील है इसमें? तो एक इंसिडेंट मुझे याद है जब मुंबई के साथ हमारा मैच था. उसमें अक्षर और ललित जब हम मैच जीत गए थे तो इनकी एक बातचीत हुई थी कि हम साथ हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं. तो सेम मोटो हमारा रॉबिनहुड के साथ चलता है कि अगर हम साथ हैं तो मंजिल दूर नहीं है. और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, ये ट्रॉफी इस साल होगी हमारे. क्या बात है, क्या बात है. ये हाँ, ये ललित और अक्षर ने साथ मिलके यही कहा था ना, हाथ मत छोड़ना, साथ मत छोड़ना. तो काफी मतलब पोएट्री जो है वो एडवर्स टाइम में बड़ी सही निकल रही थी. और उसका पोएट्री इन मोशन हो गई खेलने में. बिल्कुल है ना रिपू? डू यू रिमेम्बर एनी ऑफ दीज मोमेंट्स कि मतलब या एक प्लेयर जिसका लिए आपने वो लगा यार ये अपना भाई है, ऐसे वाला कुछ ऐसे कुछ हुआ? वो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं. और हम दिल्ली वाले, हमारा तो वो निकल ही जाता है. बिल्कुल सही बात है. बट आई थिंक एक चीज जो हम एज स्पोर्ट्समैन जब हम देखते हैं तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हम बहुत देखते हैं कि है हमारी टीम में नहीं है. एंड वी सॉ दैट ऑन द फील्ड व्हेन डेविड वार्नर वाज नियरिंग हिज 100 एंड लास्ट ओवर चल रहा था और उसको 4-5-6 रन चाहिए थे. एंड रॉबमैन पावेल, द न्यू गाय in the team, was on the striker's end, and he asked David Warner कि मैं तेरे को एक सिंगल लेके देता हूँ, तू भाई मार अपना सेंचुरी कंप्लीट कर. करेक्ट. हमारा डेविड वार्नर भाई बोला नहीं भाई तू अपना खेल, वी नीड टू गेट द हाईएस्ट स्कोर फॉर द टीम, नॉट फॉर मी. डेविड वार्नर डिडंट गेट द सेंचुरी बट वी क्रॉस 200 एंड दैट वाज अ मैसिव स्कोर. सो जब हम ब्लॉगिंग भी करते हैं, राइट, व्हिच इज रनिंग, व्हिच इज लाइक अ स्पोर्ट व्हाइल पिकिंग अप लिटर, एंड सबसे ज़्यादा हमारा जो ऑडियंसेस होता है वो यूथ का होता है, टीनेजर्स होते हैं, बच्चे होते हैं. So sportsman spirit is the most important thing. If we can inculcate that sportsman spirit, we can coexist with each other. आप और मैं यहाँ पे साथ में भाई कर सकते हैं. बिल्कुल सही बात है. और हम मदर अर्थ के साथ भी
वो भाई भाई कर सकते हैं, right? So I think 100%. sportsman spirit teaches us that, Absolutely. and that was one moment when DC won our heart. क्या बात है. And I think अब दिल्ली दूर नहीं है, ट्रॉफी यही आने वाली है. बिल्कुल. और प्रसून जोशी ने लिखा था ना दिल्ली 6 में, इसकी दाएं तरफ भी दिल है, इसकी बाएं तरफ भी दिल है, ये शहर नहीं महफिल है. और क्या महफिल सजाई थी, मतलब एकदम. और हमारे प्लेयर्स ने महफिल सजा के रखी है. तो योगेश, any of those moments, any specific player that has made your heart beat loud, roar मचाने के लिए? Every player that we have represented in our artworks, we've kind of gone and looked into what makes them special. Right. And be it Rishabh Pant with his captaincy, and he's been consistent. In fact, हमारे Hero City के 2 बार के जो murals हैं, उसमें ऋषभ की ही consistency रही है. बाकी टीम के players change हुए. उसकी captaincy, उसकी wicket keeping, उसका game play, and obviously his part of the roar of Delhi Capitals is what stayed constant. The only thing that changed literally for us उसके अंदर was his jersey. बंदा तो वही था. I mean, he was still the captain, he was still the leader of the team, he was still playing a really good game, except some visual changes which we put in place. But now we have a new and improved version of him, not only on the field but on the wall. Absolutely. ऐसे जब हमने अक्षर पटेल को represent किया IIT में, तो उसको भी देख के लगा कि अरे इसकी शक्ल तो कुछ और प्लेयर्स ऐसी भी हो सकती है. So we'll be very careful कि इसकी जो यूनिकनेस है, उसके गेम की जो यूनिकनेस है, उसके जो अपना स्टाइल है, वो निकल के आना चाहिए. And I think वो ही देखकर IIT के स्टूडेंट सब बोले यार ये बिल्कुल सही बना है. इसकी रिप्रेजेंटेशन, इसकी गेम की रिप्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है. तो we are really hoping and wishing that this team, हमारी टीम, will go all the way, get qualified, and hopefully win the trophy and bring it back home. यार थोड़ी सैडनेस भी है, लेकिन कितनी हैप्पीनेस है कि क्वालिफाई वाला सीन है यार. वी आर कैपिटल्स, दिस इज द लास्ट शो फॉर वी आर कैपिटल्स. इट्स बीन एन ऑनर एंड अ प्लेजर प्रेजेंटिंग दिस शो टू यू, बीइंग द वॉइस ऑफ दिल्ली. मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है कि दिल्ली की आवाज बनने का मौका मिले. वो मौका मिला. रियली रियली हम्बल्ड फॉर दैट. एंड ऑफ कोर्स मोर इम्पोर्टेंटली to have known DC की Toli, to have known the roar that they can they can generate, and to really feel luxuriate in the support, the unconditional support that goes to Delhi Capitals has been an absolutely wonderful experience. So thank you very much for giving us that experience. And of course, मतलब so close to the trophy, तो ऐसा मन कर रहा है कि अब जो है ना रोर करते हैं. और हमारे साथ 3 लोग हैं जो हमारे साथ रोर तो करेंगे ही. तो on the count of 3 हम कहते हैं we roar together. ठीक है? 3, 2, 1. We roar together. Thank you for watching. We are Capitals.